Hello friends, welcome to Unacademy GATE and ESE. This is your educator Apuroop and you are watching Concepts in Minutes, and in this video we are going to understand what is area moment of inertia, which is a very basic concepts of physics, but a lot of us do not actually understand the meaning of it, do not actually understand the significance of it. कई सारे लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग और उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझते, जो कि समझना बहुत जरूरी है. So let's understand in this video what exactly is area moment of inertia. But before we start, let me introduce myself. My name is Apuroop, all India rank 320 in GATE Mechanical. I've done my MTech from IIT Kharagpur and my specialization was Mechanical Systems Design. In my final year of MTech, I was recruited by Mahindra & Mahindra. I worked in the field of design of cars for 2 years. Then I decided to quit my job and I've been teaching for more than 6 years now. And I teach subjects related to design, strength of materials, machine design, engineering mechanics and theory of machines. Now let's start with today's topic. What exactly is area moment of inertia? So beta, first of all, let me tell you that there are two types of moment of inertia. Moment of inertia दो तरीके के होते हैं. We have area moment of inertia and we have mass moment of inertia. There is a slight difference in both of them. Their meaning, their significance is also different. So I have another video on mass moment of inertia. So if you want to understand their difference, watch that also and you will understand the difference between the two. अगर आपको difference समझना है तो दोनों अलग अलग separate videos हैं बेटा, दोनों videos को देखो और आपको समझ में आ जाएगा area moment of inertia क्या है और mass moment of inertia क्या है. यहां मैं एक simple चीज बता देता हूं, नाम से ही समझ में आ रहा है that this has something to do with the area of the body and this has something to do with the mass of the body. Okay, बाकी context दोनों का same है. Okay, now let's understand what is exactly area moment of inertia, also known as moment of inertia of area, also known as second moment of area. Second moment of area. Okay, अब second moment of area क्या होता है? So beta, very easy. Moment of a force is what? Force multiplied by distance. किसी force का moment हम कैसे निकालते हैं? Force multiplied by perpendicular distance. So just like that, second moment of area क्या होगा? First moment of area will be area into distance. Take moment another time, take moment one more time, it will become area into distance means area into distance का square. But distance from where? That we need to understand. So let's understand exactly what is moment of inertia of area. It is a geometrical property of an area which indicates how its points are distributed about an axis. Let's say beta, we have this area. मान लो एक body का ये area है. Okay, this is an axis. This is an axis and I want to see how different points of this area are distributed about this axis. मैं ये देखना चाहता हूं कि इन सारे पॉइंट्स का इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, how far they are distributed from this axis. So do you understand moment of inertia is what? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बता रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता रहा है कि एरिया के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो एक एक्सिस से, कोई भी एक एक्सिस से कितने दूर तक फैले हैं. जितने ज्यादा दूर तक फैलेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. सो व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया? हाउ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दैट एरिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट एन एक्सेस. इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी. ये डिपेंड करता है बॉडी की ज्योमेट्री पे, यानी कि शेप एंड साइज पे. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट बेटा, इट सिग्निफाइज द रेजिस्टेंट ऑफ एन एरिया अगेंस्ट द अप्लाइड मोमेंट. सो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, व्हाट डज इट मीन? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस, व्हाट डज इट मीन? सो अंडरस्टैंड बेटा, लेट्स से I am applying a moment about this axis. मान लो
इस एरिया के ऊपर मैं एक मोमेंट लगा रहा हूं अबाउट दिस एक्सेस. ओके, आई एम ट्राइंग टू रोटेट दिस एरिया अबाउट दिस एक्सेस. सो बेटा, हाउ मच रेजिस्टिंग मोमेंट इट विल अप्लाई, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाउ मच मोमेंट इट विल रेजिस्ट, कितना मोमेंट आप इसके ऊपर लगा पाओगे, ये कितना झेल पाएगा, that will depend upon its moment of inertia. So if moment of inertia is high, then the resisting moment will also be high. जितना ज्यादा इसका moment of inertia रहेगा, उतना ज्यादा ये उस moment को resist करेगा. अब आप सोच रहे होगे यार ऐसे कैसे, how it is going to do that? So understand with a very simple concept. Okay, let's say we have a beam. Let's say we have a beam which is subjected to moment like this. Okay, we have a beam which is subjected to moment like this. Let's say this is M, this is M. Let's consider an area. मैं एक area consider कर लेता हूँ. Okay, let's consider this cross section. Okay, now cut this cross section, cut this cross section and draw the free body diagram of this left part. इसको मैं कट कर देता हूं और इसके लेफ्ट पार्ट को ड्रॉ कर देता हूं. सो दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बीम. ओके, आई हैव कट दिस बीम फ्रॉम दिस ब्लू वाला एरिया. ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ मोमेंट m. सो देयर मस्ट बी an equal and opposite moment on the right side. Now how this moment is going to be resisted? ये मोमेंट कैसे रेजिस्ट होगा? सो बेटा, देयर विल बी इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेन. इस प्लेन पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे. कैसे डेवलप होंगे? अंडरस्टैंड बेटा, इट इज बेंडिंग एंड इन केस ऑफ बेंडिंग इंटरनल फोर्सेस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं होगा. ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कब मिलता है? इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, then the resisting forces will be like this. But right now I am not applying a force. So right now the resisting forces will not be uniformly distributed. Understand, the resisting forces will be linearly distributed like this. Resisting forces जो हैं वो linearly distribute होंगे कुछ इस तरीके से. ये क्या है मेरे भाई? These are resisting forces. और ये रेजिस्टिंग फोर्सेस मिलके एक क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएंगे, राइट? दीज रेजिस्टिंग फोर्सेस विल अप्लाई अ क्लॉकवाइज मोमेंट, विल अप्लाई अ क्लॉकवाइज मोमेंट which will resist this moment m. Now understand beta, the particle which is away from this point, which is the neutral axis, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इससे जो पार्टिकल जितना दूर रहेगा वो उतना ज्यादा मोमेंट लगाएगा, उसके ऊपर रेजिस्टिंग फोर्स उतना ज्यादा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्टिकल इज फार फ्रॉम दिस पॉइंट, द सेंटर पॉइंट. सो दिस पार्टिकल इज अप्लाइंग मोर रेजिस्टिंग फोर्स. This particle is near to this axis, so it is applying less resisting force. So if you want more resisting force, अगर आपको ज्यादा resisting force चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे मेरे भाई? आप ये चाहोगे कि पार्टिकल इस सेंटर से जितना दूर रहे उतना अच्छा, हाँ कि ना? ये यहां रहेगा तो और रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, यहां रहेगा तो और रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा. तो आप क्या चाहोगे कि आपका पार्टिकल, योर पार्टिकल ऑफ द एरिया शुड बी एज फार फ्रॉम दिस एक्सेस एज पॉसिबल. यानी कि इस एरिया को जितना दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा मोमेंट मिलेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट मिलेगा, क्योंकि मेरा फोर्स उतना ज्यादा आएगा. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली? Why we want the area to be away from this axis? Why I want my particles to be away from this axis? Because if the particle is away from the axis, it will apply more resisting force, it will create more resisting moment. जितना पार्टिकल दूर रहेगा उसका रेजिस्टिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट उतना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा मोमेंट झेल पाएगा. So I hope this point is clear to you. Why
the moment of inertia is so important. If the moment of inertia is more, means my particles are away from the axis, and if my particles are away from the axis, their moment of inertia, their resisting forces and resisting moments will be more. So do you understand the physical meaning and the significance of area moment of inertia? I hope आप सबको area moment of inertia का फिजिकल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और इसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ये जरूरी है, कहां ये जरूरी है. तो बेटा, इन केस ऑफ बेंडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट, वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी हाई. जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट ये झेल पाएगा. ओके, नाउ बेटा, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो अंडरस्टैंड, the moment of inertia is second moment of area. Okay, it is moment of area, means area into distance ka square. Why square? Because it is second moment of area. Okay, area into distance square, so second moment of area. Now beta, if all the particles are at one distance, then you can easily do this, area into distance square. But all the particles are not at constant distance, right? This particle is at some different distance, this particle is at some different distance, this particle is at some different distance. So different particles are at different distance. So we cannot directly calculate moment of inertia by area into distance ka square. That is not possible. So what we are going to do, we are going to assume a very small area. This is a very small area. Okay, dx dy. Okay, let's say the area is equal to dx dy. Let's say this area is dA. Okay, now understand, let's assume that this area is at x distance from y axis and y distance from x axis. Now let's say I want to calculate moment of inertia about x axis. मान लो मैं x axis के about moment of inertia निकालना चाहता हूं. Okay, so what will be the formula beta? If this area is very small, can I assume that all the particles of this area are at constant distance from x axis? सारे particle का एक single distance है क्या? Y. Why? Because this area is very small. The original area is very large. So all particles are at different distance. But beta, if I consider this small area, then all the particles are almost at same distance. Why? From x axis. Why x axis? Because I am calculating moment of inertia about x axis. Why I am calculating moment of inertia about x axis? Because I am applying moment about x axis. So I want to see resistance about x axis. मेरा मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो मैं रेजिस्टेंस भी एक्स एक्सिस के अबाउट चेक करूंगा ना कि एक्स के अबाउट कितना रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है पार्टिकल. अगर मैं एक्स के अबाउट मोमेंट लगा रहा हूं तो एक्स से पार्टिकल कितना दूर है, अगर मैं वाई पे मोमेंट लगा रहा हूं तो वाई से कितना दूर है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आई एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. व्हाट इज डिस्टेंस? वाई इज डिस्टेंस. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? So sorry, can I write it like this? Y square dA. Now beta, what is this? This is moment of inertia of this small area about x-axis. But I don't want moment of inertia of this small area. I want moment of inertia of complete area. So can I write it like this? Integration y square dA. Yes, I can write it like this. Okay. Now this is moment of inertia of this area about x-axis. Similarly, moment of inertia about y-axis will become integration x square dA. Integration x square dA. Okay. Now these are moment of inertia about x and y-axis, which are parallel axis. x और y क्या है मेरे भाई? x and y क्या है? Parallel axis हैं. But बेटा एक और axis है, z axis, which is what? Perpendicular axis or normal axis. Okay. Z axis जो है वो normal axis है. Now बेटा x and y are the distance from parallel axis. What will be the distance from normal axis? Can anyone tell me what will be the distance from normal axis? Normal axis से distance को क्या मैं r लिख सकता हूँ? Can I write the distance from normal axis? Z axis r. Yes, z axis से ये किस distance पे है? r distance पे है.
एंड बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, आर विल बी इक्वल टू, यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है, कैन आई राइट आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर, या फिर मैं कैसा लिख सकता हूं, कैन आई राइट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, यस. Now beta I about z axis can be written as integration r square dA, and what is r square, x square plus y square. So can I write iz equals to integration x square dA plus integration y square dA, or can I write iz equals to ix plus iy? Yes, I can write it. Now what is this beta, what is this? This is known as polar moment of inertia. What is polar moment of inertia beta? Moment of inertia ix and iy are about parallel axis. Polar moment of inertia is about normal axis, perpendicular axis. और बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना है, वेरी सिंपल, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस एंड ऐड देम, यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नॉर्मल एक्सिस. ओके, अब बेटा डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब निकालोगे, you will be calculating moment of inertia about different axis when the moment is acting about different axis. If the moment is applied about x axis, I need ix. If the moment is applied about y axis, I need iy. If the moment is applied about z axis, I need iz. Now beta moment applied about parallel axis is what, bending moment, and moment about normal axis is what, twisting moment. So these two are resistance against bending and this is resistance against twisting. So I hope that everyone is clear about moment of inertia. Moment of inertia is what? It is the distance of different particles from the axis, any axis. Now why do we need this? Because beta if the particle is away, the resisting force will be more, resisting moment will be more. So we want more moment of inertia. Okay. So beta this is how we find the moment of inertia. Okay, I hope everyone is now clear about the significance. Okay, now beta if you want to see my other lectures, then just open this one link, tinyurl.com/apuroop10. बस ये एक लिंक खोल लो और आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे सारे लेक्चर्स के लिंक्स और उनके नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. दिस इज माय Telegram channel Apuroop10. Just open any Telegram, just open your Telegram app and search Apuroop10. Follow this so that you will never miss any of my class. मेरी कोई भी क्लास अगर मिस नहीं करना चाहते, मेरी क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो बेटा ये फॉलो कर लो. एंड बेटा अगर आपको हमारे साथ गेट या ईएसई के फुल स्ट्रक्चर्ड बैच में पढ़ना है, देन टेक Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे यूजिंग दिस कोड. आप ये कोड यूज कर सकते हो Apuroop10. अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का ऑफ तो मिलता ही है और साथ में आपको मिलता है मेरा पर्सनल गाइडेंस. सो इफ यू वांट टू स्टडी अंडर माय पर्सनल गाइडेंस, यूज दिस कोड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन Unacademy प्लस. ओके बेटा, बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you so much.